Hello students, welcome you all on behalf of Resonance. I am SRN sir, Srinivas Naidu, and today's morning shift paper 24th JEE main memory based paper, and in this let us see what are the questions given. The first question given is the magnetic moment of M2 plus is 3.87 bm, the species is. So here the magnetic moment दिया है आपको 3.87 bm. So magnetic moment हम spin only magnetic moment को हम calculate करेंगे based on this formula. By using this formula हम magnetic moment को calculate करेंगे. Here n number of unpaired electrons है और ये approximately n प्लस 0.84 bm के बराबर होता है. तो इसमें n वैल्यू आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करेगा. सो यहाँ 3.87 bm दिया है, इससे आपको पता चल रहा है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 3. सो इस फॉर्मेट में आप लिख के देखेंगे तो ये आ जाएगी आपको 3 प्लस 0.87 bm. सो ये n वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है 3. सो इन द गिवन आयंस n value, that means number of unpaired electrons should be 3. So let us see in which ion number of unpaired electrons will be 3. So in Mn2 plus, if you write the electronic configuration, outer electronic configuration, it is 3d5 4s0. So number of unpaired electrons are 5. In V2 plus 3d3 4s0, number of unpaired electrons are 3. And in titanium 2 plus 3d2 4s0, number of unpaired electrons 2. And Cr2 plus 3d4 4s0, number of unpaired electrons are 4. So from this we can observe number of unpaired electrons 3 in V2 plus. If you calculate, it is root over 15 bm magnetic moment, root over 15 bm, it is approximately 3.87 bm आएगा. सेकेंड क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है. हम जानते हैं क्वेश्चंस कंपलसरी फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसमें इजीली क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 5 times ClCl2 एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल. प्राइमरी वैलेंसी मतलब सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करेगा. सो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 3. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लो, यहाँ कितने लिगैंड्स है 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर +3, that means primary valency 3 and secondary valency 6. So answer 3. In which of the following acid reduce silver nitrate into silver? So ये फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स है. ये फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स में जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स होगा वो फास्फोरस ऑक्सी एसिड रेड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट करेगा. तो इसमें H3PO2 में आप देख सकते हैं, H3PO2 में there are 2 hydrogens. So this phosphorus oxy acid, this is hypophosphorus acid, can act as a reducing agent. And in the given, that is orthophosphoric acid and pyrophosphoric acid and polymetaphosphoric acids, there will be no hydrogen atoms at all. So the proper answer for this is H3PO2. इसमें hypophosphorus acid reduces silver nitrate into silver and it oxidizes to H3PO4. Okay, so इसमें H3PO4 में कहीं भी आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, pH बॉन्ड्स नहीं मिलेगा. इसमें H4P2O7 में भी आपको pH बॉन्ड्स नहीं मिलेगा. पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में भी pH बॉन्ड्स नहीं मिलेगा. जिसमें pH बॉन्ड्स नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट नहीं कर सकता.
तो इसमें ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, केवल हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. CuCl4 2- is a tetrahedral complex. The electronic configuration of central metal ion is, it is E2N T2M. Find the value of N plus unpaired electrons. ये है क्वेश्चन. इसमें cobalt is in +2 state in CuCl4 2-, cobalt in +2 state, and if you write the splitting in the tetrahedral complex, the splitting will be like this, that is E2 set and T2 set. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम 3D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिलअप कर रहे हैं. पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिलअप होगा और उसके बाद पेयरिंग हो रहा है. अब इसमें ये 3D7 कॉन्फ़िगरेशन हम CFT में इस तरह लिख रहे हैं. अब इसमें E2 2 एंड T2 1 अब इसमें आपको E2 में जो N वैल्यू है ये क्या होगा 4, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे E2 2, दैट मीन्स टोटल वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज E2 4 एंड T2 3. सो इसमें N वैल्यू है ये आपको इस तरह फॉर्मेट में दिया है, E2 4 एंड T2 M. अब इसमें N वैल्यू है 4 एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 3, सो N प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 7. ये इजी लेवल क्वेश्चन ही है. नेक्स्ट, अनदर इजी क्वेश्चन from ionic equilibrium based on buffer solution. A 25 milliliters of buffer solution is prepared by mixing 0.1 molar acetic acid and 0.01 molar sodium acetate. If the pK of acetic acid solution is 4.76, then calculate pH of the buffer solution. It is the acidic buffer solution. So for acidic buffer solution, pH equal to pKa plus log salt concentration upon acid concentration. pKa value given as 4.76, log 0.01 by 0.1, it will be equal to 3.76. It is direct substitution type. Next, this is the matching question from metallurgy. इसमें ये मैचिंग करना है. सिलिकॉन, यहाँ तो आपको मेटल्स दिया है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पिग आयरन, कॉपर, और इस तरफ दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, रिवर्बरेटरी फर्नेस एंड ब्लास्ट फर्नेस. अब इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हम जोन रिफाइनिंग मेथड से प्यूरिफाई करेंगे, एंड एल्यूमिनियम इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करेंगे, and pig iron is obtained in the blast furnace and copper is obtained in the reverberatory furnace. So the answer correctly matching is first one. This is a question from atomic structure. The wavelength of first line in Paschen series is 720 nanometers. The wavelength of second line in the series is, so इसमें from Rydberg's equation 1 by lambda equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. For first line of Paschen series, n1 value कितना होगा 3, n2 value 4. That means when electron jumps from 4 to 3, then you will get first line in the Paschen series. And second line from 5 to 3. So n1 value is 3, n2 value is 5 for the second line. So if you substitute the data, इसमें डेटा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वेवलेंथ तो दिया आपको 720 नैनोमीटर
एंड इसमें 1/n1 स्क्वायर है 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड इट इज 1/720 इक्वल टू 5/9 इंटू 16. ये कैलकुलेशन किया तो RH इंटू जेड स्क्वायर वैल्यू ये आ गया. नाउ सेकेंड लाइन के लिए 1/λ2 फाइंड करना है अपन को. RH इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करूं तब λ2/720 विल बी इक्वल टू 7/9 इंटू 16 into 9 into 25/16. If you calculate this, you will get λ2 as 492 nanometers. So, what is the second line wavelength? 492 nanometers. This is the question from S block elements. On reaction of beryllium oxide with hydrogen fluoride in presence of ammonia gives X. X on thermal decomposition gives beryllium fluoride and ammonium fluoride. So, beryllium oxide on reaction with HF in presence of ammonia, we are getting NH4 twice BF2. That means ammonium BF4. Ammonium beryllium fluorate. अब इसमें ammonium ion and beryllium fluorate ions are obtained and this compound on thermal decomposition इसको heat करेंगे then it will give beryllium fluoride and ammonium fluoride. So this is the best method of preparation of beryllium fluoride. So beryllium fluoride prepare करने के लिए ये source है. अब इसको हम कहाँ से लेकर आएंगे? बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया यू विल गेट दिस कंपाउंड. दिस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स बेरिलियम फ्लोराइड. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT लाइन्स. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग. यहाँ आपको दिया है प्योर वाटर, रेन वाटर, आइस एंड impure water. In the ice that is in solid state, each water molecule is bonded with 4 other water molecules. It is bonded with 4 other water molecules. Tetrahedrally it is bonded. So the strongest hydrogen bonding you can observe in this ice. So ice में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. Next, among the following, which metal cation gives red precipitate with dimethyl glyoxime? So dimethyl glyoxime when reacts with nickel 2+ in presence of ammonia, you will get nickel dimethyl glyoximate. ये complex बनेगा which is in red colored precipitate. So which ion can give? Nickel. Next question, which of the following data are corresponding to non-spontaneous reaction at 300 Kelvin? यहाँ तो डेल्टा H और डेल्टा S वैल्यू दिया है. आप जानते हैं डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. If delta G is negative, then the reaction is spontaneous. If it is positive, non-spontaneous. If it is 0, it is at equilibrium. So यहाँ हमको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स डेल्टा G वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. सो डेल्टा G वैल्यू किस में पॉजिटिव होगा ये हम चेक करेंगे. सो इसमें फर्स्ट डेटा सब्सटीट्यूट करके देखा तो डेल्टा G वैल्यू आ गया -1000 जूल पर मोल एंड इट इज नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस है.
सेकेंड डेटा हम सब्स्टिट्यूट करके देखा है, ये भी नेगेटिव आ गया, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। थर्ड डेटा, इसमें डेल्टा H वैल्यू 25 है, डेल्टा G वैल्यू -20 दिया है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करके देखा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। दैट मीन्स ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और फोर्थ वन यू कैन ऑब्जर्व, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है डेल्टा G का, तो ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। सो इसमें हम ये चेक करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G वैल्यू किसमें पॉजिटिव है, और यदि नेगेटिव आ गया वो स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट स्टेटमेंट, the freezing point of a solution decreases with decrease in amount of volatile solute, and we know delta TF equal to I into KF into M। यहाँ amount of non volatile solute ये decrease किया तो M वैल्यू भी क्या होगा, decrease होगा। M वैल्यू decrease हो गया तो delta TF भी decrease होगा। डेल्टा TF डिक्रीज हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपको बता रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Next question, this is from mole concept. 50 grams of NaOH is dissolved in water to get 450 ml of solution. What volume of the solution is required to prepare 500 milliliters of 0.1 molar NaOH solution? इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये M1 V1 इक्वल टू M2 V2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें आपको ये दिया है 500 इंटू 0.1 मोलर, और इसमें मोलारिटी 50 ग्राम्स है। 50 बाय NaOH का मोलर मास 40 इंटू 1000 बाय volume 450 into V1. So if you find V1, it is if you solve this you will get 18, that is the volume of NaOH required. The next question is from S block again. अब इसमें आप देख सकते हैं ये भी मैचिंग टाइप है। सोडा ऐश, you know soda ash is sodium carbonate, and chlorophyll contains the magnesium ion, and white washing के लिए, ये दीवार को white wash करने के लिए calcium hydroxide we can use this calcium hydroxide, and toothpaste contains sodium fluoride. So the first one is the answer. So soda ash is nothing but sodium carbonate. Chlorophyll contains which ion? That is magnesium ion. White washing के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? Lime, that is calcium hydroxide. टूथपेस्ट में ये कौन सा कंपाउंड होगा? सोडियम फ्लोराइड होगा। Next, graph of X-ray frequency versus atomic number is linear. Find the value of n. This is Moseley's equation. From the Moseley's equation, it is root over nu equal to a into z minus b. इसमें nu power कितना लेना है? Nu power it is taken as 1/2 equal to a into z minus b. So ये वैल्यू को n से इंडिकेट कर रहा है, so n वैल्यू क्या होगा? 1/2. It is the Moseley's equation. It is given in the periodic table. Next question, which of the following statements are correct
regarding Arrhenius equation. This is the Arrhenius equation k equal to a into e power minus ea by rt. अब इसमें first statement, slope of graph between ln k versus 1 by t is minus ea by r. So let k equal to a into e power minus ea by rt. If you take natural logarithm on both sides, ln k equal to ln a minus ea by r into 1 by t. Now if you plot the graph between ln k and 1 by t, it is a straight line with negative slope, and slope equal to, you can write minus ea by r. So first statement is correct. Second statement, on increasing ea rate constant decreases. Yes, इसमें ये ऑब्जर्व कर लो, on increasing ea rate constant क्या होगा, ये डिक्रीज होगा. If you are taking ea by rt, on increasing ea rate constant, that is k value, ea value इंक्रीज करेंगे, ea by rt वैल्यू इंक्रीज होगा, e पावर माइनस ea by rt वैल्यू डिक्रीज होगा, दैट मीन्स k आल्सो डिक्रीजेस. सो ये भी सही है. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, on increasing temperature, temperature coefficient decreases. It is also correct. Kt plus 10 by Kt equal to mu into delta T by 10. नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये है. ऑन इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी on increasing activation energy, fraction of molecules crossing energy barrier increases. ये गलत है. क्यों? इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर डिक्रीजेस. तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो जितने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. इसलिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकता है. तो आंसर इसके लिए क्या होगा, ये बी एंड सी ओनली करेक्ट. नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर. दिस इज द based on Fayon's rules. More covalent character is for smaller cation, larger anion, and pseudo inert gas configuration for cation, pseudo inert gas configuration. सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें फर्स्ट वन KF और KI में यहाँ कैटयन इज सेम. इफ यू ऑब्जर्व द F minus and I minus is larger ion, so larger anion is there, that means covalent character will be more for Ki because polarizability of anion will be more. Polarizability is more means polarization is more. Greater the polarization, greater is the covalent character. That's why Ki has more covalent character. And CuCl, NaCl, in this anion is same. And if you observe the cation Cu plus and Na plus, Cu plus has 3d10 4s0 configuration. It has Na plus has 2s2 2p6 configuration. It has inert gas configuration. It has 3s2 3p6
3d10, that means ये 18 electrons configuration, pseudo inert gas configuration. This is 8 electrons configuration, that is inert gas configuration. जिस cation के लिए pseudo inert gas configuration है उसके लिए polarizing power ज़्यादा है, polarizing power ज़्यादा है तो covalent character ज़्यादा है, तो इसलिए CuCl is having more covalent character, so this is also correct. Next one, lithium fluoride and potassium fluoride. In this, anion is same, and if you observe the cation, lithium plus and potassium plus, in these smaller cation will have more polarizing power. That means इसमें lithium plus will have more polarizing power. That means more covalent character. So these three orders given are correct. Okay, students, that's all in the first session. We will meet again in the second session. Thank you.